और कोई भी एक या दो कलर के आप अगर अपने पास पेन या स्केच पेन रख पाएंगे तो आज हम बस इसी के सवार कुछ इंटरेस्टिंग सवालों के ऊपर चर्चा करेंगे. I'm just waiting for a couple of more minutes and then of course we'll start. I can see that there are 40 plus participants who have joined from Zoom and there are 10 to 15 people from YouTube have joined. सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में. In the session or what we have planned with you today is we wanna talked about some interesting problems on the square grid पेपर बेस्ड. इसके ऊपर हम कुछ इंटरेस्टिंग सवालों के ऊपर चर्चा करेंगे. couple of things we have discussed in the last sessions, but even if people who are not able to join in the last sessions, we would be I mean that and this part is independent, so I would say even if you have missed the last session of code series, it's okay to sort of be here and we would like to have a discussion on interesting. So today there are people from Delhi, Uttar Pradesh, Telangana and few other states have joined. Some of our Kendriya Vidyalaya and GNV teachers have also joined. So I try to keep the language a mixed between. Let me just spotlight this. Okay. So there are friends from northern part of India to the southern part of India and all across the country have joined today. So I try to keep my language and English and Hindi mixed. तो आज जो है वो थोड़ा अंग्रेजी और हिंदी भाषा का मिश्रण करेंगे. बट लेट्स से फॉर एग्जांपल इन दी कंटेंट पार्ट, whenever you are not able to follow any particular questions or the things we are discussing, please feel free to ping me over in chat or wherever you wanted to, let's say or a YouTube chat or a Zoom chat, and I would be more than happy to repeat it once again. Even once the session is get over at 12 o'clock, we still be there for 10 to 15 minutes if somebody has a doubt or things they wanted to discuss, they can of course do it. तो आज थोड़ा भाषा का है वो मिक्स उपयोग करेंगे. आशा है कि I would be able to sort of convey the things we wanted to discuss in to all the people who have joined from across the country. ठीक है. जो लोग अभी अभी जुड़े हैं उन oh yeah, I can see Uma ji have joined from Chennai. नमस्कार. So there are few friends who have joined from DAV Chennai as well. Good to see some of the old friends and workshop participants and master trainers and teachers through whom we have interacted from a long time in various mode. सभी का बहुत बहुत स्वागत है. तो आप सभी से निवेदन है कि अपने पास एक कागज और पेन रख लीजिए. अगर आप इस प्रकार के स्क्वायर ग्रिड के कागज को प्रिंट करके रख पाए तो बहुत ही अच्छा है. आई कैन सी द नरेंद्र जी हैज आल्सो जॉइंड. So from some of the teachers whom we have interacted in 2019 as a part of in service course, नरेंद्र जी इज एन केंद्रीय विद्यालय टीचर और हमने 22 दिन साथ में गुजारे थे कैंपस के अंदर, 12 days in a summer and 10 days in a summer. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. Very, I mean, really happy, feeling overwhelmed to see the faces of some of you. All right. ठीक है जी. So let me once again go back to my slides and let me give you the glimpse of what we have planned to discuss today. So we will be talking around somewhere around 5 to 6 interesting problem statements, and I'll try to give a walkthrough of what sort of problems. So first we'll try to start with some very basic exercise of actually drawing a squares and triangle on a square grid paper. आज जो है हम कुछ 5 से 6 इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के ऊपर चर्चा करना चाहेंगे. एंड इट वुड स्टार्ट विथ अ वेरी बेसिक एक्सरसाइज ऑफ एक्चुअली ड्राइंग अ स्क्वायर एंड अ ट्रायंगल ऑन अ ग्रिड पेपर, एंड वी वुड सी सर्टेन इंटरेस्टिंग थिंग ऑफ अ मिडिल स्कूल एंड हाई स्कूल मैथमेटिक्स वुड कम आउट ऑफ इट. देन we'll do a bit one step ahead to that, and then we wanted to actually do some number theory based problems on a square grid. Once again, we'll draw right triangles, but few properties or few patterns we wanted to find it out, and we wanted to see how the number theory is coming out of it. तो आज जो है सबसे पहले हम कुछ चौकोन और त्रिकोण को इस स्क्वायर ग्रिड में ड्रॉ करेंगे
और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हम एक काटकोण त्रिकोण, एक राइट ट्रायंगल को ये हमारी स्क्वायर ग्रिड के ऊपर ड्रॉ करेंगे, और उसमें से जो पैटर्न कुछ निकल के आ जाते हैं उसको देखने की कोशिश करेंगे। फिर आज जो है हम एक कंप्यूटर एल्गोरिदम, कंप्यूटेशनल थिंकिंग की एक चीज को देखेंगे, और देखेंगे कैसे 1000 साल पहले हमारे एक भारतीय ने इसके ऊपर काम किया था, और आज की तारीख में उसको बोलते हैं हैमिल्टोनियन पाथ, जिन्होंने उसके 900 साल बाद हमारे कश्मीरी पंडित रुद्रता ने जो काम किया था, उसके 900 साल बाद 19वीं शताब्दी में जो काम किया था उसके ऊपर उनको नाम दे दिया हैमिल्टोनियन पाथ। जबकि उससे 900 साल पहले हमारे कश्मीरी पंडित पंडित रुद्रता ने उसके ऊपर काम किया था, और उनकी कहानी को आज हम जानेंगे, और फिर दो तीन मजेदार प्रॉब्लम्स को देखेंगे जिसके अंदर आपको सवाल का डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा, बस चित्र दिए जाएंगे, और उस चित्र से हमको सिर्फ समझना है कि प्रश्न क्या है। तो ज्यादातर तो हमारे पाठ्यक्रम में ये होता है, हमको सवाल दिया जाता है और उसका उत्तर खोजना होता है। नॉर्मली इन अवर टेक्स्ट बुक्स usually the question is given and we have to find the answer, but today what we're gonna do is we'll actually not only have to find the answer, but we have to also understand the problem statement, we have to also understand the question। सवाल को भी समझना है, चित्र के माध्यम से सवाल को समझना है, और फिर उसका जो है उत्तर लाना है। हमको पैटर्न समझना है, क्वेश्चंस के अंदर पैटर्न क्या है, और उसके बाद उत्तर को खोजना है। ठीक है जी, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे फिर एक और बार आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। एंड द वेरी फर्स्ट थिंग विच आई वांटेड टू डिस्कस ऑन द स्क्वायर ग्रिड इज, लेट मी शो यू ऑन माय स्लाइड्स। हम जो है इस स्क्वायर ग्रिड पेपर के ऊपर चौकोन को ड्रॉ करना चाहते हैं। वी वांटेड टू ड्रॉ squares on let me just change the control a bit, or just a second. Okay, so we wanted to draw a squares on a grid point, and the question is which squares you cannot draw on the square grid, and the vertices of all squares should lie on the grid points. The question is the square with the area 3, can I draw that or not? The square with the area 8, can I draw it or not? Can I draw a square with area 10 or not? Can I draw the square with area 12 or not? Can I draw the square with area 13 or not? So among the 5 areas of square which is listed down here, which squares I cannot draw on the square grid point? And what is the condition? My vertices should lie on the square grid points. So let me take you to the overhead camera as well, and let me once again repeat the problem statement. फिर एक और बार आपके लिए सवाल दोहरा देते हैं। मुझे जो है वो स्क्वायर ड्रॉ करना है, चौकोन ड्रॉ करना है स्क्वायर ग्रिड के ऊपर। कैसे, कौन कौन से स्क्वायर ड्रॉ करने हैं? जिनकी एरिया 3, 8, 10, 12 और 13 है, वैसे एरिया के स्क्वायर मुझे ड्रॉ करने हैं स्क्वायर ग्रिड के ऊपर। प्रश्न है कौन से वाले स्क्वायर को मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, और कंडीशन क्या है मुझे स्क्वायर ड्रॉ करने की? मेरी स्क्वायर ड्रॉ करने की कंडीशन ये है कि मुझे मेरे जो सारे स्क्वायर के 4 वर्टिसेस है, 4 जो उसके स्क्वायर के बिंदु है, वो स्क्वायर ग्रिड के जो पॉइंट्स है उसके ऊपर रहने चाहिए। ठीक है, ये आपके ऊपर सवाल है, और सवाल है कौन से वाले मैं चौकोन नहीं ड्रॉ कर सकता, वो मुझे पता करना है। ठीक है, चलिए एक बार मैं आपको अपने ओवरहेड कैमरा पे ले चलता हूं, और थोड़ा मैं इसको नीचे ले लेता हूं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूं। ठीक है, ये मेरा स्क्वायर ग्रिड है, और उसके ऊपर मुझे चौकोन ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहला सिंपल अपना स्क्वायर ले लूं, तो इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया है वो हो जाएगा 1। और ऐसा क्यों?
क्योंकि इसकी साइड आप देखें तो इसको मैं मान लेता हूं एक साइड लेंथ, और स्क्वायर का हमें जो फॉर्मूला है वो पता है कि जितनी भी साइड है उसका वर्ग कर दे, उसको उसी के साथ गुणा कर दे तो उसका एरिया मिल जाता है, क्योंकि चौकोर की दोनों साइड बराबर है। तो इसका एरिया है 1। ठीक है, अब मुझे दो मान लीजिए दो एरिया वाला स्क्वायर ड्रॉ करना है, तो कैसे करें? तो मैं यहाँ पे मान लीजिए दो साइड वाला है, वैसे पॉइंट्स ले लेता हूं या वो साइड लेंथ ले लेता हूं, और यहाँ पे नीचे आ जाएगा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो इसकी साइड कितनी हो गई? इसकी साइड हो गई 2, और ये वाली साइड भी है वो 2। और एरिया के लिए स्क्वायर का फॉर्मूला है कि जो भी साइड है उसका वर्ग किया जाए या इन दोनों को गुणा किया जाए, मतलब इसी साइड लेंथ को उसको साथ गुणा किया जाए, तो 2 गुणा 2 हो जाता है 4। पर मुझे तो चाहिए था कि मेरी जो साइड है वो उसका जो स्क्वायर है उसका एरिया 2 मिले, और इसमें आप देख भी सकते हो, ऐसे भी देख सकते हो कि इसके अंदर 4 ये वाले सेल्स है, ये वाले छोटे छोटे स्क्वायर्स है। तो एक का एरिया 1 है और ऐसे 4 है, इस तरह से भी देख सकते हैं कि इसका एरिया 4 है। तो अब मैं कैसे ड्रॉ करूं कि उसका स्क्वायर जो है उसका एरिया मुझे 2 मिले? और इसके लिए मेरी जो, तो अगर इसका, एक सेकेंड साइलेंट कर देता हूं। तो जब मेरा एरिया, जब मेरी साइड जो थी वो अगर जब 2 थी, तो उसका एरिया है वो 4 हो जा रहा था। तो मुझे ऐसा करना है कि मेरी साइड क्या हो ताकि एरिया मुझे 2 मिले। तो मुझे ऐसा नंबर चाहिए जिसको उसी के साथ गुणा करने पे उत्तर जो है वो 2 आए, और वो नंबर है √2। इस संख्या को इसी के साथ गुणा करने पर जो उत्तर मिलेगा वो होगा 2। और प्रश्न है कि √2 वाली में साइड लेंथ ड्रॉ कैसे करूं? ये तो एक इररेशनल नंबर है। ये जो नंबर है उसको मैं किसी फ्रैक्शन या ए या बी रैशनल फॉर्म में नहीं लिख सकता हूं। तो प्रश्न है कि मैं √2 इस स्क्वायर ग्रिड में ड्रॉ कैसे करूं? तो आप अगर अपनी इस स्क्वायर ग्रिड की कोई भी स्क्वायर की डायगोनल को देखें, अब इसमें भी जो दोनों बिंदु है, so let me just repeat it once again. So what we have started with is, we have started with and drawing a simplest square in a grid which has an area 1. The moment I took the side length as 2, so I eventually wanted to make a square with area 2, but if you see here, the moment I make the side length 2, the area has become 4. And that is also very much visual. From looking at that, you can see that there are 4 squares sitting in this particular square. Now what I wanted is, I wanted, when I took a side length as 2 and got the area as 4, what I want is the area as a 2. And what is the number? What is the side should I keep? So this is, that number is this. The definition of a square root says that the number which is multiplied by itself, and the answer is 2. What is that number? That number is square root 2. And if I look at this diagonal, and if you observe both the vertices of this side length of this particular segment is lying on a square grid thing. And what are the other points? These are the other points. The area of this, if you look at, there are 4 half right triangles or half of your square. This as well as this. These are 4 half of the square resulted into total area as in 2. That is also, you can how you can see. The other way could be, if you look at this particular right triangle, this side is 1, this side is 1. So for this right triangle, let me draw it on the bottom. So for this right triangle, or this particular right triangle, both of these sides are 1. And within Pythagoras, you can find it out that the hypotenuse of this particular right triangle would be the square, sum of the squares of these two sides, which is 1 square plus 1 square and under root of that, which is square root 2. So this has a side length square root 2, and the area of this square is 2. Let me draw it once again.
this particular square has the side length as square root 2 and the area of this square is 2. How about 3? Can anybody tell me that whether can I draw a square which has area 3 and all of its squares vertices is lying on the square grid point? And how about 4? 4 we have just drawn. How about 5? How about 6? How about 7? How about 8? How about 9? Or the options, let's say what we have listed out here. Let me once again take you to the PPT. So 2, as you can see in the slides, 1 and 2 we have just drawn. 4 also we have drawn. 3, can we draw it or not? That is the first of it. How about 5? And this is what the slides show and claims that it is actually having an area 5. Let me just try to see how we can draw the area 5. Let me take you to my overhead camera. So if I take this, so now as per the, let me take another page. So how I could create a square with an area 2 is by, or let's say when I say I want an area as in 5, the side length has to be the square root of that, which is the square root of 5. Question is, how do I create a square root of 5 in this particular square grid paper? And for that, one of the option could be, can I one option is directly, if I can have that line being created, if it is an integer number, I can draw that integer number segment or that length segment in the square grid paper. But if that number, so either the length I wanted to draw on a square grid paper, please don't share your screen. Oh, wonderful. Thank you, Sandeep ji. So you wanted to share some of that. Oh, thank you so much for doing so. All right. So I'm getting a bit slow because there are audience from various background have joined. There are also children from KGBV. Richa Srivastava ji have joined. So I'm getting a bit slow, but the questions, you can try to solve the questions. If you know the answer, what we are discussing right now, you can look at the questions below. So let's say, for example, what is the question? Let me take you once back to the PPT. Among which number listed here, 3, 8, 10, 12, 13, which area square you can not draw? इसमें से कौन से वाले स्क्वायर जो है आप ड्रॉ नहीं कर सकते, वो आप तब तक पता कर सकते हैं. एंड इफ यू नो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, आप ये ढूंढ सकते हैं कि 1 से 25 में से कौन से वाले स्क्वायर जो है वो हम ड्रॉ कर सकते हैं, वो मुझे लिस्ट आउट करना है. ठीक है जी, चलिए एक बार फिर से स्लाइड पे चलते हैं और मैं अपने ओवरहेड पे ले चलता हूं. सो लेट्स से, अगर मुझे मेरे स्क्वायर का एरिया 5 रखना है तो कैसे ड्रॉ करें? तो मुझे ऐसा लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ √5 हो. और √5 कैसे ला सकते हैं? तो मुझे ऐसा ढूंढना है कि ये जो मेरा नंबर 5 है, क्या मैं इस नंबर को किसी दो स्क्वायर नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं. इन द सेम कि क्या मैं उसको a² + b² के फॉर्म में अगर कर दूं, तो ये, और a और b इंटीजर है, तो मैं उस लेंथ के यहाँ पे, इंटीजर लेंथ के यहाँ पे जो राइट ट्रायंगल है उसके 2 साइड्स बना दूंगा, तो मुझे इसका जो है वो स्क्वायर रूट मिल जाएगा. ठीक है. सो मुझे ऐसा 2 नंबर ढूंढने हैं a और b कि जिनका स्क्वायर का सम जो है वो 5 हो जाए. तो आप देखेंगे कि अगर मैं 1² + 2² करूं तो ये हो जाता है 1 + 4 और ये हो जाएगा 5. तो मुझे ऐसा राइट ट्रायंगल ड्रॉ करना है कि जिसकी एक जो है वो डंडी 1 यूनिट की हो और दूसरी वाली जो डंडी है वो 2 यूनिट की हो. आई वांटेड टू ड्रॉ राइट ट्रायंगल इन सच अ वे दैट द one of the side is 1 and the other side is 2. If I now look at this line segment, this is 1, this is 2, this line segment is actually square root of 5, which means if I draw a square around this, once again let me draw this
angle here. Here you go and please observe कि इसके दोनों, इस सेगमेंट के जो दोनों शिरोबिंदु हैं वो हमारे स्क्वायर ग्रिड के ऊपर ही हैं. And then let me once again just draw this square out there. Each of them is drawn in a similar way. If you look at for each of this line segment, एक जो होगा, ये वाली जो दूरी होगी वो 1 है और ये वाली जो दूरी है वो है 2 है. इसका एरिया, इसकी साइड लेंथ जो है वो है √5 और इसलिए इसका एरिया हो जाएगा इसी साइड लेंथ का वर्ग मतलब 5. And this is how we have drawn the square with an area 5. How about 6? How about 6? So I need to find it out the two numbers whose sum of square is has to be this particular number, and it turns out to be for the 3 and 6 I cannot find. How about 8? Can somebody tell me how can I draw the square with an area 8? क्या कोई बता सकता है मुझे? Can somebody from the people who have joined, can somebody guide me about what are the two numbers? √5 plus 1 square, sir. हाँ, फिर से बताइए. √5 square plus 1 square. √5 square plus 1 square. हाँ, ये किसके लिए? √6 √6 के लिए. बहुत बढ़िया. 6 So all right. So मुझे आपका नाम भी बता दीजिए. हाँ, ये संदीप जी बता रहे थे. संदीप जी, यू वर रिफरिंग टू दैट थिंग 6 के लिए. नहीं, आई एम रिफरिंग 8 2 square plus 2 square. अच्छा, you are referring to the 2 square plus 2 square. All right. Somebody else was saying about drawing a 6 area triangle, and how to draw the, let's say for example, √6. That is what somebody was referring to. All right. No? ठीक है. Just let me know if you have thoughts on how to draw the square area with 6. ठीक है, चलिए. And mind well, the constraint has to be there. What is the constraint? Constraint is there कि your all the points of a square has to lie on the square grid points. They cannot be somewhere in middle of the lines or between the area of a square. No, they has to lie on the grid points, the lattice points. ठीक है. So somebody said about कि 8 का वाला स्क्वायर का एरिया कैसे ड्रॉ करें. So that can be drawn. हेलो. हाँ जी, या. हाँ, 8 के लिए सर 2 square plus 2 square. 2 square plus 2 square. All right, चलो करके देख लेते हैं. Isosceles right triangle. All right. So okay, let me take you to the overhead camera and how we would like to draw, as some of you have pointed out कि मुझे 8 का एरिया कैसे करना है. So one option is that if it is the square of some number, and right now we are trying to generalize, if that number, whatever area we wanted to draw, let's say for example, let me take that number as an A. If it is square of some number and then B is integer, तब तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट द 4, सो 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, तो तब तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि 2 का लेंथ वाला जो है आप यहाँ पे सेगमेंट बना लीजिए और आपका स्क्वायर जो है वो बन जाएगा. या फिर 16 है इन सब के लिए, या 9 है इन सब के लिए, तो बहुत ही आसान है कि जो है आप इस तरह से स्क्वायर बना सकते हैं. तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है. दूसरी पॉसिबिलिटी है कि द नंबर हैज टू बी द सम ऑफ टू स्क्वायर नंबर्स, तब जाके मैं उसको बना सकता हूं. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल फॉर द 8 आई हैव टू फाइंड इट आउट अ कॉम्बिनेशन कि भाई कौन से जो नंबर है उनके स्क्वायर से ये बन सकता है. सो एज somebody has pointed out, the 8 could be written as 4 plus 4, which is also 2 square plus 2 square. तो मुझे क्या करना है कि 2 my bad, let's say for example it is, yeah, so 8 can be also, so the side length what I want for the 8 has to be
So if I look at this particular triangle, this triangle, this right triangle, it has height as in 2 and base as in 2, and this length would be the 2 root 2, or in other sense, let's say for example, it can also be written as root of 8. And how do I draw this? How do I draw this particular square on a grid? So उसी तरीके से यहाँ पे कर लेते हैं ड्रॉ. ठीक है, ठीक है, ठीक है, thus. So all of them has a side length as root of 8, or it can be also written as 2 multiplied by square root 2, and the area of this particular square is 8. All right, and this is, I'm keeping in homework for you, for all of you. And how do I generalize this? Which squares among, if given an n as an area of a square, question is how do I know whether I can draw any square on a grid point or not? So the answer is that either that number should be the perfect square number, or if I can write that number in the form of squares of two number. Let me once again write that particular conditions on an overhead camera. What are the conditions? So the conditions are either that number n, where n is the area of a square, and the n, whether I can draw on a square grid or not. That condition is, the first condition is if that n is a perfect square number. And what I mean by perfect square, that n can be represented as, let's say for an example, the square of some number where a is an integer. This is the definition of a perfect square. Or that number, the another possibility is that the number n can be written in the form of a square plus b square, sum of two squares of an integer number. If these two conditions are getting satisfied, then I can draw that particular square on a square grid area, and you can identify among 1 to 25 which numbers are can be represented in this form. That many squares can be drawn, and I'm keeping this as an homework for you. Next is an interesting thing. As of now we have drawn the square. The next question is, ठीक है, तो मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं. या तो किसी नंबर को मैं अगर ये दो कंडीशंस मीट हो रही है तब ड्रॉ कर सकता हूं, या तो वो जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, जैसे कि 1 है, जैसे कि 4 है, जैसे कि 9 है, जैसे कि 16 है, 25 है, या तो फिर उस नंबर को मैं किसी भी दो इंटीजर के स्क्वायर के नंबर के सम के फॉर्म में लिख पाना चाहिए. तो अब तक तो हमने चौकोन ड्रॉ किए. टिल नाउ वी हैव ड्रॉन द स्क्वायर. नेक्स्ट इज ड्रॉइंग अ ट्रायंगल. And if you have a square grid paper, please show me drawing an equilateral triangle on a square grid. So the next question is, we wanted to draw an equilateral triangle on a square grid. And if somebody tells that I cannot, then you have to also actually prove that I can. It is not me who cannot draw. It is not actually possible to draw equilateral triangle on a square grid paper. क्या सवाल है? मुझे ऐसा त्रिकोण बनाना है इस स्क्वायर ग्रिड के ऊपर जिसमें सभी बाजुओं की लेंथ बराबर हो. I wanted to draw a triangle on a square grid paper such that all length of all the sides of a triangle should be equal. ये ट्राइंगल मुझे ड्रॉ करना है. So for those who have seen I cannot, you have to give me a proof of why I cannot draw an equilateral triangle.
Any thoughts? Anybody who has drawn, please let me know so that we can see their triangle which they have drawn. ठीक है. Also, it would be nice to if in between, if you can switch on your cameras, it would feel good to me that just Yes, sir, some people because are. if we find out the third side, that would be the Pythagoras theorem under two times. So that will not be equal. So we can say that it is not possible to draw the pattern of equilateral triangle. एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं? Can you repeat it once again? I missed the initial part. हाँ, आप जो बता रहे थे 2 root 2 वाला. The third side, that would be the Pythagoras theorem under two times. So that will not be equal. So we can say that it is not possible to draw the pattern of equilateral triangle. All right. So you wanted to say that कि let's say the Yes, sir, of course. height of the triangle would be Sum root of 3. सर बोथ साइड का हम जब स्क्वायर करेंगे सम करेंगे तो वो अंडर रूट 2 टाइम्स आएगा, तो जो थर्ड साइड हम निकालेंगे वो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग अंडर रूट 2 टाइम्स हो जाएगी, तो इक्वल होगी ही नहीं. जैसे 3 और 3 क्या. हाँ, मुझे थोड़ी. हाँ, ज्योत्सना जी आप बोल रहे हैं? आपके स्कूल से बोल रहे हैं? मुझे एक्चुअली थोड़ी मिक्स आवाज आ रही थी एंड मुझे पूरा नहीं समझ आया वो अब क्या कहना चाह रहे थे. बट लेट्स से फॉर एग्जांपल उतना मुझे सुनाई दिया कि जो एक साइड है वो स्क्वायर रूट 2 बनेगी और सब जो है वो उसी समान लेंथ की बनाना मुश्किल है, ऐसा कुछ समझ में आया. ठीक है. यस सर, ज्योत्सना सिंह फ्रॉम केजीबीबी का उत्तर प्रदेश. नमस्कार ज्योत्सना जी. एक बार फिर से आप बता दीजिए ना आपका. मैं एक्चुअली बीच में मेरी भी आवाज वहां से सुनाई दे रही थी तो समझ नहीं आ रही थी. थोड़ा थोड़ा आराम से बताइए. ठीक है. पहला स्टेटमेंट क्या है आपका? हाँ. मीनवाइल नरेंद्र कुमार सर इज सेइंग कि दी इफ एरिया इज इक्वल टू दी सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू. अच्छा, आप वो कंडीशंस बता रहे हैं. इफ एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कोप्राइम्स. why we need a co-primes, नरेंद्र जी? सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि एज इक्विलेटरल, तो इक्वलेटरल मतलब साइड इक्वल होनी चाहिए. जी जी जी, सही बात है. एरिया इज इक्वल टू दी सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ. सही बात है ज्योत्सना जी. इफ एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ. ठीक है जी. अगर किसी का इसमें और कुछ सुझाव है तो बता दीजिएगा. लेट मी थॉट व्हाई आई फील दैट यू कैन नॉट ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑन अ स्क्वायर विथ टी. चलो मैं अपनी तरह से मेरी जो समझ है, लेट मी जस्ट ट्राई टू शेयर दैट विथ यू. सो लेट्स से इसके लिए मैं अपना थोड़ा कैमरा ऊपर ले लेता हूँ. सो जब मैं यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ और लेट मी जस्ट ट्राई टू ड्रॉ इट ऑन अ ब्लैंक पेपर. ट्राई टू राइट समथिंग. So let's say if I draw an equilateral triangle, I'm not drawing with an exact dimension because I wanted to derive something, but just bear with me that for an inaccurate drawing. और इसकी जो साइड लेंथ है मैं मान लेता हूं a है, या 1 भी मान सकते हैं आप सिंप्लीफाई के लिए. तो सबसे पहले how do I find the area of this particular equilateral triangle? So one of the way could be कि अगर यहाँ पे मैं इसके बेस के परपेंडिकुलर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूं और ये वाला जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए ये वाला जो है वो बाइसेक्टर भी होगा इस सेगमेंट के लिए. ठीक है. यू कैन गो बैक टू अवर बेसिक स्कूल ज्योमेट्री एंड यू कैन डिराइव दैट. और इसकी जो दूरी होगी वो पूरी साइड लेंथ है वो a है, और इसकी जो साइड लेंथ है वो हो जाएगी इससे आधी.
तो a/2 हो जाएगी, और ये वाली जो साइड है वो a हो जाएगी। तो ये वाली जो हाइपोटेनस हमारा a है, एक साइड राइट ट्राइंगल के अंदर a/2 है। तो प्रश्न है कि इसकी हाइट कितनी होगी। अगर मुझे इसकी हाइट मिल जाए तो मुझे ये जो ट्राइंगल है उसका एरिया का फॉर्मूला भी मैं निकाल सकता हूं, या एटलीस्ट ये जो दो राइट ट्राइंगल है उनका मुझे एरिया मिल जाएगा, तो मुझे पूरे ट्राइंगल का भी एरिया मिल जाएगा। तो वो इस पर्टिकुलर राइट ट्राइंगल के अंदर ये वाली अगर मुझे हाइट उसकी ढूंढनी है तो वो हो जाएगा कि जो हाइपोटेनस है वो माइनस ये वाली जो एक साइड है That is root उसको मैं 3a अगर by 2. इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये वाला मुझे मिल जाएगा 3a² by 4, और इसका मुझे स्क्वायर रूट लेना है इस पूरी चीज का। तो ये वाला जो है मुझे अपना हाइट मिल जाएगा √3/2a। ये मुझे मिल गई मेरी जो हाइट है वो। अब मुझे पता है मेरे इस राइट ट्राइंगल के अंदर, मैं एक और बार एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूं, and I'm repeating some of the basic geometry because there are also students from 6th grader 7th grader have also checked। तो मुझे मेरी हाइट पता चल गई है इसकी, that is √3/2। और अभी के लिए मैं a को हटा देता हूं, इसको 1 ही मान लेता हूं, और ये वाला जो है वो है 1/2। तो ये जो राइट ट्राइंगल है इसका एरिया, इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो, उसका फॉर्मूला मुझे पता है। उसका फॉर्मूला है कि 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, और ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 गुणा उसका बेस है 1/2 गुणा इसकी जो हाइट है वो हो जाएगी √3/2। और जो पूरे ऐसे दो ट्राइंगल्स हैं इन दोनों को मिलाना है, तो इस पूरी चीज को मैं 2 से गुणा कर देता हूं। तो ये जो वैल्यू है वो आ जाएगी √3/4। इसका मतलब है कि, और ये जो है वो एरिया है हमारे इक्विलैटरल ट्राइंगल का। जितनी भी साइड है उसको मैं √3 गुणा 4 से अगर गुणा करूं तो मुझे जो है वो मेरा एरिया है वो मिल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल का जो एरिया है वो हमेशा हमेशा इररेशनल नंबर होगा। लेट मी जस्ट ट्राई टू वंस अगेन कंक्लूड दैट what we have just derived is that कि जो मेरा इक्विलैटरल ट्राइंगल है उसका एरिया का फॉर्मूला है the area of an equilateral triangle is √3/4 multiplied by its side length। इसका मतलब है कि ये जो एरिया है वो इररेशनल नंबर है, क्योंकि कोई भी इररेशनल नंबर, √3 एक इररेशनल नंबर है, जैसे √2 एक इररेशनल नंबर है, √5 एक इररेशनल नंबर है। उसको इररेशनल नंबर का मतलब है कि उसको रैशनल फॉर्म में नहीं लिख सकता, उसको a/b के फॉर्म में मैं नहीं लिख सकता। तो किसी भी संख्या को इससे गुणा करूं एक्सेप्ट a जो है वो साइड लेंथ है वो उसकी इंटीजर होनी पड़ेगी। तो अगर वो इंटीजर है, साइड लेंथ मेरी इंटीजर है, तो ये वाला जो √3 है वो पूरी ये वाली जो संख्या है वो हमेशा इररेशनल ही रहेगा। Sir, small submission, sir. हाँ जी, हाँ जी, प्लीज गो अहेड। Area of equilateral triangle is √3/4 Oh, I times mean of a square. Here a it would be a square. square. Yeah, My bad, yeah, my yeah, bad, my yeah. bad. So because whatever number you took a, because Yeah, it's a side yeah, length, and yeah, that's why it's an a square. So yeah. because whatever number you take, if you take the square of that, this would remain as an let's say for example the area would remain as an irrational form। ठीक है, अब मुझे जो करना है वो ये करना है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आई वांटेड टू राइट ड्रॉ और इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑन माय स्क्वायर ग्रिड। सो लेट्स से फॉर एन एग्जांपल यू हैव ड्रॉन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल आउट देयर। मान लेते हैं कि आपने जो है वो इक्विलैटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, and here we'll try to prove using contradiction।
let's say you have drawn an equilateral triangle. It doesn't seems like an equal triangle, but let me believe that for now कि इसकी सभी जो साइड है वो बराबर है। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने ये दिखाया कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसका एरिया में √3 आ जाता है, √3/4 मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर है। ठीक है, अब मुझे ये दर्शाना है कि ये जो एरिया है उसका इररेशनल मिलता है। उस इंफॉर्मेशन को लेके कैन आई ट्राई टू प्रूव इट हियर फॉर द स्क्वायर ग्रिड थिंग। तो अभी के लिए मैंने एक ट्राइंगल ऐसा ड्रॉ कर लेता है। लेट मी अज्यूम दैट पर्टिकुलर ट्राइंगल हैज एन एरिया और आई कैन एक्चुअली ड्रॉ दैट इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑन स्क्वायर ग्रिड थिंग। उसके तीनों जो बिंदु है वो स्क्वायर ग्रिड के ऊपर रखे हुए हैं। if I draw if I draw and let me try to use another pen. Surrounding this, if I draw a square or a rectangle, then area of this green has to be rational. Why? Can somebody tell me that? Because no matter whatever, let's say for example, square you draw on an square grid paper, whatever, let's say, I mean, it would be a square. The enclosing of that would be a square, and it has to be a rational because it's a square. This particular square except the pink area, आप देखिए तो इसके अंदर टोटल और 3 राइट ट्राइंगल बन रहे हैं। this these are the 3 right triangle, and it is not a square, but because my equilateral triangle is not drawn in that particular way, but you can go back and try to do some basics, because it's in assuming that it's an equilateral triangle, enclosing that has to be the square. And if you look at your other 3 right triangles, their area also has to be rational. ये वाला भी रैशनल होना पड़ेगा। Rational minus rational can always be the rational, and that's why this cannot be an irrational. So some of the things I have jumped it here because कुछ चीजें जो है वो some gaps I have tried to keep and fill for you, but these are my thoughts कि क्योंकि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल आपने ड्रॉ किया है वो एक स्क्वायर के अंदर एम्बेडेड है, उस स्क्वायर के अंदर 3 राइट ट्राइंगल आ रहे हैं एक्सेप्ट द इररेशनल वाला जो पार्ट है। यहाँ पे ये जो 3 राइट ट्राइंगल है उनके एरिया विद द थिंग्स वी हैव राइट नाउ वी हैव डन हियर, उनके जो एरिया है वो has to be the rational, and with that if you can prove that the entire thing is rational, these are the triangle will be rational, and then with that can you prove that the equilateral triangle inside cannot be an irrational number. ठीक है, some gaps I am keeping open for you. कुछ जो चीजें हैं हमने यहाँ पे जंप की because पूरी की पूरी प्रूफ करना is not the scope of this particular sessions, but this is what I wanted to give a direction, and I'm asking you to fill some of the gaps here. दो और प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैं आपको दिखाना चाहता हूं for the rest of the 15 minutes. So let's say the next problem is, next what we wanted to do is, let's say मैंने I'm not sure but let me try to zoom in this a bit. ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे राइट ट्राइंगल्स ड्रॉ करने हैं क्योंकि ट्राइंगल्स लेट्स से किसी का कुछ डाउट था? somebody wants to say something? ठीक है,
चलिए, so next what I wanted to Sir, do is, sorry to interrupt, but would you please repeat this concept? अच्छा, Rational or irrational? There is a network is I am unable to comprehend. ठीक है, ठीक है। तो ज्योत्सना जी, मैं क्या करता हूँ, मेरा ये वाला जो 2 प्रॉब्लम है ना, वो 15 मिनट में खत्म कर देता हूँ। एंड एट 12 o'clock, इफ इट इज ओके फॉर यू, कैन आई रिपीट एट 12 o'clock? आपको एक और बार जो है वो मैं 12 बजे रिपीट कर देता हूँ, ये वाला। जैसे ही ये वाला सत्र है, उसके बाद आप जुड़े रहिएगा, एंड देन आई कैन रिपीट दिस वंस अगेन। इज इट ओके ज्योत्सना जी? ठीक है ये? ऑलराइट, सो ठीक है ज्योत्सना जी, अब मैं आपको जो है यही वाला जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक और बार, ये वाला जो हमारी चर्चा हुई, एक और बार मैं रिपीट कर देता हूँ। बस ये मैं 12 बजे तक का, क्योंकि कुछ शिक्षक लोग हैं वो अपनी स्कूल से जुड़े हैं, दे माइट नॉट बी एबल टू ज्वाइन फॉर अ लॉन्ग। Okay, sir. जी, Thank you very much. ओके ओके ज्योत्सना जी, चलिए। सो हाँ, लुक एट इट। अब मुझे जो है वो मुझे अपने स्क्वायर ग्रिड के ऊपर राइट ट्राइंगल्स ड्रॉ करने हैं। एंड व्हाट इज माय इंटरेस्ट, कितने लेटाइस पॉइंट मेरी ये ग्रिड पॉइंट्स के ऊपर है, मेरे सॉरी हाइपोटेन्यूज के ऊपर है, वो मुझे फिगर आउट करना है। लेट मी जस्ट रिपीट माय क्वेश्चन वंस अगेन। आई वांटेड टू ड्रॉ अ डिफरेंट राइट ट्राइंगल्स ऑन अ स्क्वायर ग्रिड पेपर, एंड आई वांटेड टू फिगर इट आउट looking at the dimension of the this right triangle, the height and the one of the side. Can I figure out how many lattice point actually lie on the hypotenuse? So let's say, for example, if you look at the right triangle which has the base 4 and in height 4, there are 5 points sitting on the hypotenuse. अगर मैं 4 बेस लेंथ और 4 हाइट वाला राइट ट्राइंगल ड्रॉ करूं मेरे स्क्वायर ग्रिड के ऊपर, और अजम्पशन क्या है, अजम्पशन ये है कि मेरे जो तीनों वर्टेक्स पॉइंट है वो ये लेटाइस पॉइंट के ऊपर है, दैट इज द अजम्पशन। तो आप देखेंगे कि जब जैसा इसका ये बेस, जूम इन कर सकते हैं, थोड़ा सा थोड़ा क्लियर नहीं और हो जूम रही इन पिक्चर। किया जाए। ओके, चलो मैं थोड़ा और जूम इन करता हूं इसको। एक ट्राइंगल आपको दिखा देता हूं, एंड देन आई विल सी इफ इट कैन बी आल्सो। या मैं आपको एक सेकेंड इसमें दिखा देता हूँ, ओवरहेड में दिखा देता हूँ, दैट दैट माइट बी अ इजियर वन टू सॉर्ट ऑफ। So if I take, let's say for example, a triangle who has an base as in 4, side length. This is my one of the side of a triangle. इसकी जो लेंथ है वो 4 है, और उसी तरह से इसकी जो हाइट है वो 4 है। और क्या मैंने कंडीशन निर्धारित की है कि जो तीनों इसके राइट ट्राइंगल के पॉइंट्स है वो लेटाइस पॉइंट के ऊपर ही है। सो द मोमेंट आई ड्रॉ द हाइपोटेन्यूस, द थिंग आई एम इंटरेस्टेड इज कि कितने इस हाइपोटेन्यूस के ऊपर कितने लेटाइस पॉइंट आते हैं, कितने स्क्वायर ग्रिड पॉइंट आते हैं। तो एक ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट तो है ही है, वो तो हमारी कंडीशन है, तो 2 तो मिनिमम होंगे ही होंगे। उसके अलावा एक यहाँ पे एक और है, बीच में एक और है, और यहाँ पे है। तो 2 तो छोर वाले हैं और 3 उसके बीच में है। सो ऑन दिस पर्टिकुलर hypotenuse, to the end points are of course there, and there are 3 more in the middle. So total there are 5 points sitting on the hypotenuse of this particular right triangle. My interest is in, if I draw any right triangle, if I draw any right triangle, let's say, and the assumption is that all the 3 points are lying on the lattice points. So the question is, on this hypotenuse, if I tell you
the length of one of the base, I mean the base is, let's say, A and the height is B, how many points are actually lying on this particular hypotenuse? That is the question. This is what I'm interested in. So now if I look at any other, and here is the question for you. What is the question? So let's say, you may not be able to see this. Let me do the fit to screen. If I once again show you this question. So the first question is, let's say if I have the base length as 30 and the height as 24, the question is which dots will lie on the triangle, and assuming the end point here is in 0 0. ये वाला जो let's say for example ये जो चोंच का point है, let me put in some dot out there, ये वाला point, ये जो है वो 0 0 है. The one with the pink mark is in 0 0 and the base is 30, the height is 24. The question is कि कौन से जो डॉट्स हैं वो इसके हाइपोटेन्यूज पे रहेंगे. पहला है 4 3, दूसरा है 12 8, तीसरा है 15 12, चौथा है 20 16 और उसके बाद है 24 20. Which lattice points and the 4 and 3 represents, the 4 represents the x coordinate, the 3 represents the y coordinate. मतलब इसकी ये जो पिंक पॉइंट है उससे हॉरिजॉन्टल दूरी है वो पहला वाला है which is 4, और उसकी जो ऊंचाई है the height is 3. So the question is, if I give you these 5 points, which point will actually lie on an hypotenuse? How do I check that? Sorry to interrupt, sir. The picture is not clear, sir. The picture is not clear, or the Yes, coordinates are not clear? Let me see if I can make it even bigger. How about now? Is it clear? The points are clear? No, sir. Still not. Okay. Clear, sir. Acha. So let me try to. clear. Yeah, sir. It's clear right now. It is clear right now. Okay. So the base is 30, the height is 24. What we are interested is in कि how many lattice point can I actually draw on the hypotenuse, or which are lying on the hypotenuse. कितने पॉइंट्स हैं इस 5 में से जो ये कर्ण है मेरे राइट ट्राइंगल का उसके ऊपर रहेंगे, थोड़ा भी अगल बगल नहीं, उसके एग्जैक्ट ऊपर रहेंगे. अगर ये आप सवाल कर लें, उसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं 5 ट्राइंगल ले लूं जिनकी बेस है 15, हाइट है 5, बेस है 15, हाइट है 6, बेस है 15, हाइट है 7, बेस है 15, हाइट है 8 और बेस है 15, हाइट है 9. इसमें से कौन से ऐसे ट्राइंगल हैं जिनके हाइपोटेन्यूज पे सिर्फ 2 ही पॉइंट लाई करेंगे, एक शुरुआत वाला और एक एंड वाला. Among these 5 triangles, there are 5 triangles, and let me also once again try to make this bigger. There are total 5 triangles. All right. Each of them having the base as 15. हर एक ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल का जो बेस है वो 15 है, ऊंचाई जो है वो 5 6 7 8 और 9 है. प्रश्न है इसमें से कौन से वाले ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज में कोई भी स्क्वायर ग्रिड पॉइंट नहीं आएगा एक्सेप्ट द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट. फॉर विच ट्राइंगल्स there would be no point lying on their hypotenuse, no lattice point would be lying on their hypotenuse. That is the questions. Once you have done that, the next question is, if I tell you the base and the height, let's say base is 72 and the height is 45, the question is
how can I tell, or can you tell me which point, how many points would be lying on their hypotenuse, including the end point and the starting point? And the next question is the base is B, height is H, how do I find how many points, how many square grid points are lying on the hypotenuse of this particular right triangle? And if you do so, if you generalize so, can you come up with the proof of why that is working? I'm trying to throw you a problem statement, because for each and every problem statement it is, or for each question, it is very difficult to, where is my OBS, just a second, here you go. So हर एक के लिए फिर से चला गया, इसको थोड़ा साइड में ले लेता हूं. So for each and every question, I wish I can go into the much detail, but 1 घंटे की ही समय मर्यादा रहती है. So I could not go into the detail. But मैं फिर से एक बार सवाल आपके लिए दोहरा देता हूं, and then one more question, and then maybe I'll end. ठीक है. So the first question is, let's say if the base is 30, height is 24. I give you a 5 set of points. First, we wanted to figure out how do I even decide कि जो पॉइंट है वो मेरे हाइपोटेनस, मेरे कर्ण के ऊपर है कि नहीं है, whether it lying or not. How do I decide that? That is number one question. Second question is, I have given a 5 triangles, each of them having the base as 15, height as 5, 6, 7, 8, 9. मुझे पता करना है कि इसमें से कौन से ऐसे ट्राइंगल है जिसमें एक भी, जिसके कर्ण में एक भी लेटाइस पॉइंट नहीं रहता है, सिर्फ शुरुआत का है और अंत वाला है. Which are the triangles, which are the right triangles on which the hypotenuse doesn't have any lattice point on them except the starting point and the end point? Once you have done that, the third question is that if I give you the base as 72, height as 45, I wanted to figure it out how many lattice point would be lying on this particular right triangle's hypotenuse, including the starting point and the end point. And once you have done that, the third question is, if I don't tell you the numbers, can you generalize that for the base B and height H, how many lattice point, how can I derive that? The only information is that it's a right triangle, all the 3 points are on the lattice point, square grid के ऊपर है, उसका base B है, height H है. How do I generalize that, and what is the proof for that? या ज्योत्सना जी, आपने आपका हाथ खड़ा किया था. फील फ्री टू अनम्यूट योरसेल्फ, और आपका कुछ भी सवाल है ना, बिल्कुल मैम बता सकते हैं. एक तीसरा प्रॉब्लम है, बस मैं वो बता देता हूं, एंड मे बी ऑन द नेक्स्ट वीक वी कैन हैव अ डिटेल डिस्कशंस ऑन टॉप ऑफ इट. जी, तो जो सवाल है वो कुछ इस प्रकार का है. स्क्वायर ग्रिड के अंदर मैंने 2 डॉट मार्क कर दिए हैं. अब मुझे ऐसा करना है इसमें से, हाँ जी उसमें. Yes, sir. My request is you to is that please would you send each question in PDF? बिल्कुल बिल्कुल ज्योत्सना जी, ये आपको स्लाइड शेयर कर देंगे. जी, तो जो सवाल है, तो जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, जो आपका कोई भी एक को स्टार्टिंग पॉइंट मान सकते हैं, कोई भी एक को एंड पॉइंट मान सकते हैं. आपको ये करना है, मान लीजिए मैंने 2x4 की ग्रिड ले ली. इफ आई टेक अ ग्रिड ऑफ 2x4, आपको कोई भी एक बिंदु से शुरू करना है, सारे स्क्वायर को कवर करते हुए एंड पॉइंट पे आ जाना है, जैसे कि यहां पे दिखाया है. ठीक है. अब मैंने क्या किया है कि मैंने ये 2x4 की ग्रिड में अलग अलग जगह पे बिंदु रख लिए हैं. आपको ये करना है कि कोई भी एक बिंदु से शुरू करते हुए सारे स्क्वायर पॉइंट्स को कवर करते हुए एंड पॉइंट पे पहुंच जाना है. जब आप ये 2x4 की ग्रिड में कर लें, तो आप जो है उसको 3x3 की ग्रिड में, ये वाले स्क्वायर में ट्राई कर सकते हैं, जहां पे मैंने 2 पॉइंट्स है वो एक कॉर्नर में, दूसरा दूसरे कॉर्नर में रख दिया है. उसी तरह से यहाँ पे टॉप राइट और बॉटम राइट में रख लिया है, और अलग अलग स्थानों पे रख लिया है. आपको क्या करना है, हमें ये करना है, हमें ऐसा पाथ फाइंड करना है कि कोई भी एक बिंदु से शुरू होंगे, कोई भी एक बिंदु से शुरू होंगे, दूसरे बिंदु तक जाना है, पर जितने भी ग्रिड के स्क्वायर है सभी को कवर करते हुए. इट टर्न्स आउट टू बी कि कोई एक या दो के लिए हम ये पाथ ढूंढ नहीं पाएंगे. सो देन द आइडिया कैन आई फिगर इट आउट कि कौन से वाले पॉइंट को मैं ड्रॉ कर सकता हूं ऐसा पाथ, और कौन से वाले पे नहीं कर सकता. उसके ऊपर अगले जो है सत्र में चर्चा करेंगे. पेन मैं आपको पेन नहीं उठाना है.
ये कंटिन्यूअस है मैम प्रगति जी, मतलब जो एक ही धागा मान सकते हैं, कंटिन्यूअस है। Similarly, and I'll come back to the story why I wanted to share you this particular problem statement. दूसरा क्या है कि ये 4x4 की ग्रिड है, मैंने अलग अलग स्थान पे एक ही बिंदु रखा है, जहां से आपको शुरुआत करनी है, आपको वहां से शुरुआत करते हुए सारे सेल्स को कवर कर देना है। और वो जरूरी नहीं है कि जो दूसरा वाला, मतलब सारे सेल्स को बस कवर कर देना है, तो यहाँ पे दूसरा छोर नहीं है, तो डेस्टिनेशन डिसाइडेड नहीं है, बस स्टार्टिंग पॉइंट डिसाइडेड है। बट ऐसे ये धागा पिरोना है, ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है सच दैट कि सारे मेरे जो सेल्स हैं वो कवर हो जाए। Why I wanted to share you this is because इसको बोलते हैं हैमिल्टोनियन पाथ प्रॉब्लम। हैमिल्टोनियन जो थे वो एक यूरोपियन थे, जिन्होंने 19वीं शताब्दी में इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर काम किया, और काफी सारे कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एल्गोरिथम में इसका उपयोग होता है। इट्स एन इंटरेस्टिंग पजल, बट व्हाई आई वांटेड टू शेयर यू इज दैट वी हैव आवर एंसेस्टर, आज से 1100 साल पहले ही वर्कड ऑन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एंड इफ टाइम परमिट्स वी कैन टॉक अबाउट कि ये प्रॉब्लम का फायदा क्या होता है। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ऐसा किया था कि मान लीजिए मैं आपको चेस बोर्ड दे दूं, और फिर जो मैं आपको पूछूं कि मुझे घोड़े की चाल चलानी है सच दैट कि मेरा जो घोड़ा है वो चेस बोर्ड के हर एक सेल में जाके जो है वो हर एक जो स्क्वायर है उसको कवर कर दे। व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि मान लो मेरा जो चेस बोर्ड है, घोड़ा जो है वो 2.5 चाल चलता है, माय नाइट कैन हैव एक्चुअली द स्टेप ऑफ 2.5 स्टेप, the way it take the step is by reaching out to 2.5 cells. And let's say for example, so you wanted to start with at the top left corner and you wanted to make your knight, you wanted to, आपको अपने घोड़े को ऐसे चलाना है ताकि वो जो चेस बोर्ड है उसके सभी स्क्वायर्स में जाके आ जाए, never coming to the same square once again. Same problem is there for all the squares. Mind well that you have to cover all the squares exactly once, not coming back to the same square once again for all of them. And look at this example so that it would be better. So if you look at this path, थोड़ा इसको भी बड़ा कर देता हूं मैं. So if you look at this, the path of a square, it is not going to the same cell once again. And this is also the constraint for your knight's tour. And a Pandit Rudrata, it has been it has been there that the chess has been invented in India, especially in the Kashmir valleys. So there is this Pandit Rudrata who has given the solution of how to do find the knight's tour in a chess board by not repeating or going back to the same cell once again, और घोड़े की 2.5 चाल चलते हुए मुझे सारे सेल्स को कवर कर देना है. And an absolutely elegant proof he has given, and this is 1100 years back done by our ancestors. What very interesting proof he has given. What is the proof? It says that it is telling the solution in the form of a Sanskrit shloka. By the description of an army, he is having some shloka. I don't understand the Sanskrit, but the word says something like this: Sena li 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 na na li li na 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 li 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 na li na li le na li na li 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 na 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 li li. So it looks like some random words out there, but it is actually a description. If somebody understands the Sanskrit, ये एक आर्मी का description है, and it also tells you the solution of how do you start with. What does it says? It says that the very first letter. So you have to also read the poem, and at the same time you also have to go and take your steps in a chessboard. So let's say first alphabet says say, and that's where you're starting from the top left. The next step says na. So I have to also read this poem in an the alphabet by alphabet. At the same time I have to also make the ninth step. And what is the ninth step? घोड़ा कैसे चलता है? 2.5 स्टेप चलता है. सो से के बाद मुझे ऐसे ना ढूंढना है इसमें से जो 2.5 के डिस्टेंस पे हो. एंड इफ आई कैन कवर दैट, लेट मी ट्राई टू डू सो. इसके बाद जो ना आएगा वो यहां पे है, ये वाला. This is the na.
दिस इज माई ना, ये वाला है, ये वाला ना है, सॉरी ये वाला, ये 2.5 डिस्टेंस पे है, 1 2 और नीचे ये वाला जो है वो ढाई। आई एम नॉट एबल टू पॉइंट इट आउट माई कर्सर टू यू, दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू सी दैट, बट ये वाला जो ना है उसके ऊपर मुझे चले जाना है, एंड दैट्स हाउ यू कैन सी ऑन द लेफ्ट इट हैज वेचअप। सो द नेक्स्ट अल्फाबेट एंड यू हैव टू The स्टार्ट picture आल्सो, not सो clear, sir. इट इज नॉट क्लियर, ठीक है, ऑलराइट, तो मैं एक बार आपको इसको प्रिंट आउट पर दिखाता हूं, ठीक है। So here, and for the sake of simplicity, let me take my chessboard as this 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4। अभी के लिए मैं अपना चेसबोर्ड है वो छोटा सा ले लेता हूं, लेट्स से 4x8 का ले लेता हूं, एक्चुअली में वो होता है 8x8 का, पर अभी के लिए मैं 4 ले लेता हूं, ठीक है। सो पहला वाला जो था यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ था वो था, एक और ले लेता हूं इस पे, that would be easier for us to do. So the alphabet cells, so the alphabet, जो मेरा जो पोएम है वो कह रहा है से ना ली 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 ना ना ली, और दूसरा वाला लाइन है ली ना 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 ली ली ली। तो सबसे पहले जो है मैंने यहां से शुरुआत की है, ये वाले सेल से, ठीक है, और ये वाला मेरा अल्फाबेट है। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, जो नेक्स्ट अल्फाबेट है मुझे ऐसे भी पढ़ते जाना है, नेक्स्ट अल्फाबेट ना है, और मुझे इसी पोयम में ऐसा ना ढूंढना है जो घोड़े के 2.5 स्टेप से रीचेबल हो। सो 1 2 और 2.5, तो ये वाला ना पे मैं आ गया, और ये वाला भी हो गया कवर, और यहां पे मुझे ऐसे जाना भी है, सो मैं यहां से यहां चला गया। अभी मेरा पोजीशन ये है। द नेक्स्ट अल्फाबेट यहां से ही पढ़ते जाना है, द नेक्स्ट अल्फाबेट सेज इट्स अ ली, तो मुझे जो है ये ना से 2.5 स्टेप ली है वो ढूंढना है, तो ये 1 2 और 2.5 ये वाला हो गया। तो मैं यहां से यहां पे आ जाऊंगा, दिस इज माय करंट पोजीशन। और उसके बाद ली के बाद आता है ली, तो मुझे अपना फिर से एक और बार ऐसा ली ढूंढना है जो यहां से 2.5 स्टेप पे रीचेबल हो, तो 1 2 एंड 2.5 ये वाला, एंड दिस इज व्हाट आई हैव ब्लेंडेड। such an poetic way of giving this solution of a night's tour। और कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटेशनल थिंकिंग में इसके बहुत सारे यूज होते हैं इस पर्टिकुलर पाथ को ढूंढने के लिए, बट व्हाट द आइडिया वाज नॉट टू शो यू the mathematics of how to find the solutions। the idea what I wanted to communicate is somebody did it 1100 years back, और हमें कैसे पता चला, कंप्यूटर साइंस के अल्गोरिदम के जिसको पिता कहा जाता है डोनाल्ड नूथ, वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर देके वो बता रहे हैं, उन्होंने खुद पढ़ के जो है वो बताया कि दीज आर द इंडियन हु हैज शोड द हैमिल्टोनियन पाथ प्रॉब्लम व्हिच वी हैव नोन, वी गॉट टू नो अबाउट 150 years back, but there is this Indian who sort of lived in the 9th century in an northern part of an India and has done this in an actual written proof about this in an absolutely poetic way। and there are few more contributions, आगे के सत्र में जो है उसकी चर्चा करना चाहेंगे, but I thought that कि maybe as a part of the square root problem and looking at the contribution by our ancestors would be an interesting thing to talk about classrooms। एक दो और प्रॉब्लम थे, बट आपके लिए मैं जो है आज का होमवर्क का सवाल जो रख रहा हूं इसी के रिगार्डिंग, तो ये है कि मेरा जो चेस बोर्ड है मैंने कुछ इस तरह से काट दिया है, ये प्लस की जैसा बना दिया है। यू वांटेड टू फाइंड अ नाइट्स टूर, कोई भी पॉइंट से शुरू कर सकते हैं, घोड़े की चाल चलते हुए इस चेस बोर्ड के अंदर, ये थोड़ा मॉडिफाइड चेस बोर्ड है, इस चेस बोर्ड में घोड़े की चाल 2.5 चाल चलते हुए सारे सेल्स को कवर कर देना है। दैट इज एन होमवर्क फॉर यू
along with the few other homeworks which we have tried. Thank you so much for being so patient with us. और आज जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद है। अगले हफ्ते कुछ इसी प्रकार से इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, कुछ इंटरेस्टिंग गतिविधि के साथ हम फिर से एक और गुरुवार जुड़ेंगे। एंड ऑफ कोर्स हर जो है वो प्रॉब्लम के हम डेप्थ में नहीं जा पाए, बिकॉज द आइडिया वाज नॉट टू look at the proofs, but the idea was to look at some interesting thing we can do out of the square grid paper, and I hope you can have an idea और उसके ऊपर थोड़ा और जो है काम भी आप कर सकते हैं। जिनको भी कुछ सवाल है, डाउट्स है, of course I can stay connected with you, but this is I Sir, thought. could you schedule this session on non-working days? Non-working days, you mean Saturday, Sundays or Sundays? Sunday, if it is possible. That could be easy. How Otherwise, about in the evening? evening, okay. Evening is also okay. After what time? हम After बिल्कुल what time? के बैठे हैं, कंप्यूटर को भी दिखा रहे हैं, इसको भी दिखा रहे हैं, क्या जरूरत है हमको? 5 बजे शाम को ठीक रहेगा। वर्षा को बिल्कुल मेरे कमरे में मत आने देना। शाम को 6 बजे, शाम को somewhere around let's say 5:30 or 6. Does that work? Yes, that also could be possible. All right. Only Muli sir. Sir. All right, Muli sir. Let me see. Then Let me have a word with every week you officials. will be sending the link, or we need to get from some other place. Will you I get this? usually put all my slides in the description of the YouTube channel, YouTube video of this. Okay. Jai Okay, sir, Jai Thank sir. you. Yes. We people Telangana schools will be runs up to 4:40 for 5 o'clock. Some people will be at the time of they will be the return in journey. Better to take after 6 or some other time. Okay. Saturday, And Sunday could be the better day. Best day. I hope so. all right. And मतलब दिक्कत ये सर, हमको एक ही दिन की छुट्टी मिलती है, but let me see if we can We do do so. agree. We do agree that. We do But here, And how about the teacher- Saturdays? Saturday also you have the full day? yes, full days. Okay. Let me see how can I optimize this? Today's Thank you to all. assignment, please And share then it do on the WhatsApp needful, group. sir. Jai sir. Thank you. Sure. In our Telangana Thank you, group. sir. Thank you, dear sir. Sure. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much, sir. All right. Thank you. Please share it that homework in the group of Telangana. Sure. For ज्योत्सना जी, आपको कुछ डाउट था, मुझे बता दीजिएगा कि कौन सी वाली चीज आपको समझ में आई है। Goodbye, sir. Sure. Thank you, sir. Thank you, dear sir. Yeah. Thank you very much, sir. Yeah, pleasure. Sure. Sorry to say you, sir, but I want to pay your attention. Could you hear? हाँ ज्योत्सना जी, आपकी आ रही आवाज? Okay, bye. Thank you very much, sir. Sorry to say. हाँ ज्योत्सना जी, बताइए। Sir, you gave me the homework, so I want to. Would you please provide the solution of these questions so that we can find the conclusion what we have derived, that is right or wrong? ये आज वाले सत्र का होमवर्क, आज जो हमने चर्चा की उसका? Yes, sir. ठीक। So that we can cross check this is wrong or right, what we have derived the conclusion. सही बात है ज्योत्सना जी। तो यूजुअली तो ऐसा करते हैं कि हमने जो पिछले सत्र में जो सवाल की चर्चा की थी ना, उनके उसमें से कुछ आज उसके उत्तर की चर्चा करने की कोशिश की, और मे बी लेट्स फॉर एग्जांपल नेक्स्ट सत्र में उसकी और चर्चा कर सकते हैं। बट आई थिंक वो आइडिया सही है आपका कि इसके एक बार उत्तर भी जो है वो पता चल जाए, तो एटलीस्ट आपकी साइड से काम हुआ है वो ठीक हुआ है कि नहीं, पता चल। ठीक है ज्योत्सना जी, मैं इसका उत्तर जो है वो भी, बस दिक्कत ये है कि जब उत्तर पब्लिश कर देते हैं ना, तो फिर जो लोग काम कर रहे होते हैं या सोच रहे होते हैं, फिर वो सोच बंद हो जाती है। बट आई थिंक दैट्स आल्सो वैलिड पॉइंट कि एक बार होमवर्क कर दें। तो अगले हफ्ते नेक्स्ट वीक है,
ये वाले होमवर्क के उत्तर पब्लिश कर देने चाहिए। ठीक है, ठीक है। मैं इसका उत्तर जो है बस दिक्कत ये है कि जब उत्तर पब्लिश कर देते हैं तो फिर जो लोग काम कर रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं, और किसी का कुछ सवाल?